Hey everyone, welcome back to my channel. So it's day 3 in the Andamans and सुबह 6:30 बजे की फेरी से we are going to Neil Island. और अभी थोड़ी देर में we'll go up on the deck to see the sea in the middle of the sea. Remember in my first video of the Andamans, I told you that it was day 3 of our vacation and we were on the Neil Island. And as promised, now I'm gonna give you the room tour. And if you haven't seen my first 2 videos, the link is in the description box. Go check them out. Right now I'm outside of my room. ये दरवाज़ा है and let me show you पीछे. This is the resort and let's go inside. This is the washroom, that is the bed, almirah, mirror, and the bonus kettle, sugar, tea, coffee, everything. TV of course, and this window has the most beautiful thing right here. Are you ready to see it? है ना बहुत सुंदर. I don't have words to explain यार. It's so beautiful. इतना अच्छा है. And luckily ये वाला रूम भी मिला है. This is the view outside. उधर वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच है, दैट्स द ओशन एंड दिस इज़ द बाकी के रूम रिजॉर्ट के. दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग हियर. ओके, इस साइड में बैल्कनी है. लेट मी शो यू बैल्कनी. These are the stairs जहाँ पे ऐसे मुड़ के रूम है हमारा. Isn't it beautiful? बहुत 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 अच्छा है. And अभी we'll go outside. We rented a scooty because it's the most convenient way there to roam around. So right now we are going to see the natural bridge
which is on Laxmanpur Beach-2. लौट के आते हैं फिर। ठीक है सर, भूलना नहीं सर, ऊपर से भूल जाते सर। ऊपर ना भी मीठा मैंगो भी है सर, आइएगा सर। सर हम लोग भी तो बैठे रहते सर, आइएगा सर, आइएगा मैम, आइएगा। ये थोड़ी है, आगे आएगा। इसका नाम नेचुरल ब्रिज है, बट ये ब्रिज के उस साइड तो कुछ है नहीं, ब्रिज तो दो जगहों को जोड़ता है। इसका नाम नेचुरल गेट होना चाहिए ना। अरे अंडरपास है ये। सो वन नेचुरल ब्रिज इज दिस, एंड हमें एक और मिला। ओवर देयर, छोटा सा, बड़ी दूर है लेकिन ये अभी हाई टाइड्स हैं तो थोड़ा एडवेंचर करके जाना पड़ा नेचुरल ब्रिज देखने रॉक्स के ऊपर से, अदरवाइज लो टाइड्स में इतनी दूर तक पानी नहीं आता है, सो यू कैन विजिट वेरी इजीली। यहाँ का एटमॉस्फेयर इज़ रियली काम एंड पीसफुल, नैरो रोड्स, दोनों साइड ट्रीज, मतलब ना यहाँ का एम्बियंस ही कुछ और है। फेरी से उतरते ही फील होने लग गया था, इतना प्लेजेंट है। नील आइलैंड इज़ वर्थ द विजिट। नेचुरल ब्रिज देखने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू भरतपुर बीच एंड देन इवनिंग में विल गो टू सनसेट पॉइंट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट बिकॉज नील आइलैंड अभी बाकी है मेरे दोस्त।